Um, Good evening, everyone. Today I'll be talking to you about this important chapter in political science called federalism. So, primarily, what is federalism, right? Federalism is a type of government in which the power is not concentrated in the hands of one system of governance and it is distributed amongst various constituents. For example, in our country like India, we have the central government and the state government. So the power that is exercised in the country, so जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है वो कोई एक गवर्नमेंट नहीं लेती है, वो डिवाइडेड होता है। तो वो लोकल लेवल पे कोई और लेता है, स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट लेता है, एंड सेंट्रल लेवल पे पूरी कंट्री के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। What are the main important features of federalism? So there are essentially these features, right? It has to have more than two or more levels of government. The different levels have to govern, they govern the same citizens, but they all have their each jurisdiction and specific matters of legislation. For example, हमारी कंट्री में हम सिटीजन्स ऑफ इंडिया भी हैं एंड हम सिटीजन्स ऑफ एक पर्टिकुलर स्टेट भी हैं और एक पर्टिकुलर ward भी हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई बिलोंग फ्रॉम उड़ीसा, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, बट आई एम ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टेट ऑफ उड़ीसा। तो मेरे को उड़ीसा स्टेट भी गवर्न करती है एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट भी गवर्न करती है, एंड जो मैटर्स है ऑफ गवर्नेंस दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द वेरियस governments, and accordingly we abide by the principles and the laws that are set by them. um, Next, that the jurisdiction of the respective levels of government are specified in the Constitution, and the fundamental provisions cannot be unilaterally changed. So, for example, today, if the central government feels कि petroleum and forest needs to shift from the central list to the state list, वो ये amendment और ये जो change है in the constitution, वो ये अकेले नहीं कर सकते हैं। उनको ये सबके कंसेंसस के साथ उनको स्टेट गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, एंड उनको उन्हीं के कंसेंसस के बाद वो ये चेंज ला सकते हैं। So why is India a federal country? As I said earlier, India में एक government नहीं है. There are various governments at different levels, and there are three lists. There's the union list, state list, and the concurrent list. Union list is the one which makes the laws on the subjects of national importance. State list वो होते हैं जो particular state अपने हिसाब से अपने laws set करते हैं, एंड कॉन्करेंट लिस्ट होते हैं जो दोनों ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। So, how is federalism practiced in India? There are three things. One, linguistic states. So, initially, when India was getting divided, there was a demand that जो भी स्टेट्स फॉर्म हो रहे हैं वो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म हो। तो फॉर एग्जांपल एक स्टेट ऑफ एक ग्रुप ऑफ एरिया जहाँ पे सिर्फ ओडिया लोग बोलते हो, उस जगह को उड़ीसा बना दे, तो हर एक जो स्टेट बनेगा वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनेगा। एंड इनिशियली उस बात को लेके थोड़ा डर था कि probably that will cause more division in the country. However, the results have been much to the surprise of everyone. It has made the administration more easier and much more feasible. Next, there's a language policy. So there is no imposition of one language in the country. Though Hindi, which is spoken by the people in the northern India, is not imposed upon it. So the central government essentially, basically to tackle the diversity which exists, हमारे country में इतने languages बोले जाते हैं, उसको tackle करने के लिए the official language is English along with the state language. So in Tamil Nadu, there will be Tamil as well as English, which is being used as the official language, and Hindi is just promoted as one of the preferred languages to be used. And there is a lot of flexibility in terms of accommodation of various languages, which is adopted by the Indian leaders. Then the center state relations. So initially the relations between the center and the state were very conflict ridden. तो जब सेंटर पे एक गवर्नमेंट होती थी एंड स्टेट पे एक गवर्नमेंट होती थी, वो लोग ऑफन क्वारल कर रहे होते थे। बट आफ्टर 1990 कोalition era आया wherein
एक कोई पार्टी कंप्लीट डोमिनेंस नहीं ले पा रही थी, जिसकी वजह से जो गवर्नेंस हो वो completely उनके हाथ में हो, because of which they had to inevitably enter into a sort of negotiation and a strategy where they had to negotiate and enter into settlements with the different parties that existed, because of which the center state relations also became much more smoother. Decentralization in India. So a major step हमारे कंट्री में डिसेंट्रलाइजेशन मतलब एसेंशली पावर जो है वो बिल्कुल डिसेमिनेट होके एकदम लोकल लेवल तक चले जाए, ताकि लोकल लेवल के पीपल भी अपनी चॉइसेस एंड अपने लॉज खुद बना पाए। तो हमारी कंट्री में 1992 में ये थ्री टियर सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करा गया था, जहाँ पे इट इज़ नाउ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी to hold regular elections to local government bodies. Local government bodies are your पंचायत, your ग्राम सभास, जो हम लोग जिसमें हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वन थर्ड ऑफ जो पोजीशंस है उसमें वो विमेन के लिए रिजर्व्ड होते हैं, एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इज़ द वन जो इसको गवर्न करता है। एंड द लोकल गवर्नमेंट इट गोज डाउन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो एक ग्रुप ऑफ ग्राम पंचायत वो बनाते हैं पंचायत समिति विच इज़ ब्लॉक और मंडल, एंड इन सब के मेंबर्स को कलेक्टिवली पंचायत मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, एंड सारे पंचायत समितिस को मिला के एक ज़िला परिषद मिलता है, एंड विच essentially like goes up to the MLAs and the MPs who sit in the ज़िला परिषद and the parliaments. So, with that, these are the important concepts in this chapter. And yes, that's the conclusion. Thank you.